हमें पहले इंडिया और पाकिस्तान रिलेशनशिप को जगह जाइथिला कहला इंग्लिश बुक रे देला पूरे Listen to me, students. देखो पहले Siachen Glacier. There has been a demand for withdrawal of Indian troops from Siachen. However, Siachen holds a strategic importance for India, and India has refused to agree to the demand. जेतेबेले सियाचिन ने थिबा इंडिया रा ट्रूप को विथड्रॉ करिया पे पाकिस्तान कोन कला डिमांड कला सेतेबेले इंडिया सेतिरे नेगेटिव रहिला. It was suggested to make it a delimited zone, demilitarized zone in the sense that would be absence of a military forces Siachen region में किछि रहिबे नाही. India and Pakistan almost managed this in November 1992. November 1992 managed करतिले. The agreement on Siachen was regarding mutual withdrawal of troops from new positions, the creation of a zone of a complete disengagement. That means withdrawal of troops. India रे जो troops असन Siachen अंचल रे से टोटली तांको केमते withdrawal करा जिवो. That was the demand of Pakistan एवं से एरिया टाको कहा गला कोन zone of a complete disengagement. And the delineation of a zone of peace and tranquility से एरिया रे शांति एवं केमते सबस्थ प्रतिष्ठा करा जिवो. The process broke down before a formal treaty would be agreed to. किछु treaty से भी formation हेई नथिला. Next, Tulbul ba Ular project. The issue was between India and Pakistan. It relates to a barrage to be constructed by Jammu and Kashmir on the Jhelum, but below the Ular Lake. Ular Lake under rahibo. The object of the barrage is to allow navigation over a distance of some 20 kilometers between Ular Lake and Kashmir टाउन ऑफ बर्मुला. बर्मुला जो मैक्सिमम टाइम कोन हो टेररिस्ट अटैक हेता है से बर्मुला रो हमर जो रहउची डिस्टेंस मन रखा उलर लेक आ काश्मीर टाउन ऑफ बर्मुला भीतर 20 किलोमीटर रहउची से 20 किलोमीटर भीतर कोन करला जम्मू एंड काश्मीर गोटे कंस्ट्रक्ट करथिला बैरेज एवं तार मुख्य उद्देश्य थिला कोन की फॉर नेविगेशन केमिति तरे यातायात करिवो ट्रेड एंड बिजनेस रहिबो. बट इट वाज अपोज्ड बाय पाकिस्तान. सार क्रिक प्रॉब्लम इटा बेसिकली आसीपर 2 मार्क क्वेश्चन दे. Sar Creek problem. Sar Creek is a 60 kilometers estuary in the Rann of Kutch. Rann of Kutch could achieve Gujarat. The Rann of Kutch lies between Gujarat on the Indian side and Sindh on the Pakistan side. Manaka, it is to be remembered, students. The Rann of Kutch lies between Gujarat on Indian side and Sindh on Pakistan side. The main problem arises between India and Pakistan because of the boundary line which divides सर्किक लाइन तला में कहि परिबा इंडिया और पाकिस्तान भीतर गोटे बाउंड्री लाइन एवं एटा कोड स्टार्ट हेछि बेसिकली रन ऑफ कुछ जोटा हमर रहउची गुजरात रे बिटवीन गुजरात ऑन द इंडियन साइड एंड सिंध ऑन पाकिस्तान साइड. इट जो अराइज हेतला दैट इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू बाउंड्री इशू. आर्म्स रेस पुल जति देखिबा इंडिया और पाकिस्तान भीतर रिलेशनशिप गुरा का ट्रबलसम हुए ऑन द बेसिस ऑफ आर्म्स रेस रे. Developed nations led by the USA have expressed their concern over dangerous arms race going on in Indian subcontinent. What is the meaning of Indian subcontinent? जेतले arms race India Pakistan भीतर चलीला विशेष करी न्यूक्लियर वेपनरीज और अम्युनिशंस तार जो इंडिया रा रहिला नेबरिंग कंट्री से ता ऊपर मध्ये तार किछि आर्म्स और अम्युनिशन रो इंपैक्ट पडिला एवं जोटा का मैं कहू छु Developed nations led by the USA have expressed their concern over dangerous arms race going on in Indian subcontinent. India conducted her first nuclear test in 1974. After that, Pakistan has been secretly developing its nuclear capabilities. जेतबे इंडिया तार फर्स्ट टेस्ट कला 1974 रे राजस्थान का थर मरुभूमि रे ता पर देखा पिले पाकिस्तान मध्ये सीक्रेटली कंडक्ट कला न्यूक्लियर वेपनरीज अंडर द लीडरशिप ऑफ कादिर खान साइंटिस्ट कादिर खान. Then students, terrorism and drugs trafficking. Pakistan has been trying a proxy war by supporting terrorist activities in Kashmir.
काश्मीर जो प्रॉक्सी वार चली डायरेक्ट वार बा रिटेलिएशन नहले मध्य परस्पर भितर सहयोगिता किछि ना किछि वार लाइक सिचुएशन अपेंड होउची in Kashmir. India has often tried to draw the attention of international community towards it. India madhya international community ର attention ଆଣିଛି. Kashmir remains the biggest issue of dispute between India and Pakistan. India ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କାଶ୍ମୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ biggest dispute ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ କଣ bone of contention ବା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଆରେ କଳିର ମଞ୍ଜି. ଆଚ୍ଛା, terrorism remains our core concern. Hello. हाँ. हाँ. Listen, students. Terrorism remains our core concern in the relationship with Pakistan and has been repeatedly raised with Pakistan, including at the highest level, whereby India has consistently urged Pakistan to fulfill its repeated assurance given to us not to allow the territory under its control to be used for supporting terrorism directed against us for any other anti-India activities. More recently, during the meeting of Indian Prime Minister with the Pak PM underlined our concerns regarding terrorism and stressed that it was imperative to bring perpetrators of the Mumbai attack to justice. Mumbai रे जो अटैक हेतला विशेष करी तीनटा होटल ऊपर जानि थिबो ताज ओबराई नरिमन हाउस ये तीनटा जगह जो अटैक करा जायतिला इंडिया सब बेले एलिगेशन आनिछि पाकिस्तान अगेंस्ट रे बट इट इज गेटिंग टू बी null and void एटा निष्फल सब हो जाय छै कारण पाकिस्तान मध्ये शो करछि एक्चुअली दैट इज नॉट कंडक्टेड बाय इट्स. Next, the Kashmir conflict did not prevent cooperation between the governments of India and Pakistan. Both the government worked together to restore the women abducted during partition to their original families. A long-term dispute about the sharing of river water was resolved through mediation by the World Bank. The India-Pakistan Indus Water Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan. तेणु जो सिंध नदी अच्छी जानी बेसिकली when we learn about Mohenjo-daro or urban civilization तो सिंध नदी रे जो जल बंटन बाबद रे इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट को मध्य किछि अंश रे रिलैक्स करा जाय छि बाय नेहरू एंड जनरल अयूब खान in 1960. It ought to be remembered. Despite all ups and downs in the Indo-Pak relations, this treaty worked well, of course functioning well. Then students, composite dialogue. India Pakistan भितरे कोन dialogue रही छि. The composite dialogue between India and Pakistan from 2004 to 8 address all outstanding issues. बहुत गुडे outstanding issues थिला कोन. It had completed 4 rounds and the 5th round was in the progress when it was paused in the wake of a Mumbai terrorist attack in November 2008. November 2008 में तो terrorist attack हैला तार जो functionaries थिला relationship गुडा का वर्तमान standstill हो जाई छि. Among its achievement can be cited a number of confidence building measures CBMs related to peace and security, enhanced people to people contact through bus and train services. अटल बिहारी वाजपेयी जिला बेले मध्ये हमर बस सर्विसेज स्टार्ट हेतिला वागा बॉर्डर दे and revival of the bilateral joint commission after 16 years. So वर्ष परे revive करतिला setting of the judicial committee to look into the humanitarian issue of civilian दुई पक्षर लोक मान भीतर जो कथा करता हुए द्विपाक्षिक bilateral civilian prisoners and fishermen held in other jails and growth in bilateral trade by 550% between 2003 to 4 and 2007 to 8 from US dollar 344 to 0.59 million to USS dollar 2.23 billion. Okay students, तमे जानि दिबो जेतेबे इंडिया पाकिस्तान भितर हमर विशेष करी नेगोशिएशन हुए तमे सिना सब जगह रे बाउंड्री लाइन अछि जोडी समुद्र अछि सेठी बाउंड्री लाइन केमिति इंडिकेट करा जिवो सी शोर रु 9 किलोमीटर पर्यंत जोटा का हम कहू नॉटिकल माइल्स सेटा होची गोटे कंट्री पई सबमर्जेंस जेतेबे तमे बॉर्डर भीतर चली छि विशेष करी फिशरमैन रहिले से माने कोन करिवे फिश जेतेबे कलेक्शन को गले बेले बेले कोन करंती एक्सेस ट्रैंकुलेटर बड़ी कोन करियो पास करी पड़ांती से बॉर्डर लाइन की जानि परंतनी कारण सेठी अवश्य ताकर भी अछंती शिप लाइक जो पीरियड्स माने से माने कोन करे कवर करे नै गेल धरि गेले बहुत गुडा माछ धराळी मध्ये अरेस्ट हेकि पाकिस्तान रे रहिदिले इंडिया मध्ये बहुत गुडा को नै के आस्तिला जेतेबे दी जण भीतर ट्रेड और बिजनेस टा कोन हापर लागले बेसिकली बहुत किछि लॉस हेतिला एंड दैट हैज बीन मेंशन ऑन यूएस डॉलर ने मध्ये मेंशन करा जाई छि को ईयर रो को ईयर भीतर केते लॉस करिछि बा केते लॉस हेछि
ट्रेड नॉर्मलाइजेशन यदि इंडिया पाकिस्तान भीतर देखिबा ट्रेड मध्ये हम नाही with a view to build confidence of the business community on both the sides. Representatives of various trade regulatory bodies of India met in India and in Pakistan. Representatives of leading chambers of commerce and industry. इंडिया रे जहां रही पाकिस्तान रे सेया रही ब्रिटिशर माने जोटा क्रिएट करिसंती पाकिस्तान इंडिया रे क्रिएट करचंती पाकिस्तान मध्ये क्रिएट करिसंती हमर जेंती इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये होची ट्रेड एग्रीमेंट रे बेस्ट यूनियन पाकिस्तान मध्ये अछि पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्रीज रही तेणु से भीतर जो नेगोशिएशन करा जायछि हेलो नहीं हाँ मु रात्रि कथा हेतले हाँ listen students attentivity of also pile kon kariba anyway we must have to complete the chapters before 15th of December so trade normalization when you consider with a view to build confidence on of the business community on both sides representatives of various trade regulatory bodies of India met in India and in Pakistan representatives of leading chambers of commerce and industry of Pakistan discussed matters pertaining to trade regulation standards labeling and marketing requirements तमे पहिले जानि थिबो पाकिस्तान रे इंडिया रा फिल्म रो बहुत डिमांड पाकिस्तान रे जदी मूवी सेक्टर फिल्म सेक्टर डेवलप करछि इंडियन मूवी पय तेनु जेतेबेले बर्तन इंडिया पाकिस्तान भितर डेवलप न होई ट्रेड रिलेशन में किछि रेस्ट्रिक्शन आछि पाकिस्तान मध्ये बहुत लॉस करछि इंडिया मध्ये बहुत लॉस करछि इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट मैच रे बहुत किछि गेन हुए किंतु इंडिया पाकिस्तान भितर जेतेबेले क्रिकेट मैच न होछि उभय कंट्री मध्ये लॉस करछन्ति तेनु देखिबा both Pakistan लॉस करछि इंडिया भी लॉस करनि देखो the two countries have installed 3 agreements तेनु ट्रेड और बिजनेस स्तर रे तीनटा एग्रीमेंट रहिछि customs cooperation agreement custom भीतर cooperation agreement customs relating what is the meaning of customs relations agreement custom कोन it is a term in economy oh customs cooperation agreement mutual recognition agreement परस्पर भितर म्यूचुअली जेतबे डेवलपमेंट करिवे एंड रिड्रेसल ऑफ ट्रेड ग्रीवेंसेस एग्रीमेंट को बडी प्रोडक्ट को कंट्री रो को कंट्री की सप्लाई हे परिबो जेहेतु दीटा जंकर दिने प्रोडक्ट गोटे थिला जेतेबेले हमें डिवाइड हे जाइछे इंडियन प्रोडक्ट पाकिस्तान मार्केट रे चली छि पाकिस्तान प्रोडक्ट इंडियन मार्केट रे चली छि तमे जानि थिबो पिले हमर विशेष करी हमें कहउछे नेपाली माने आनंती विंटर ड्रेसेस किंतु विंटर ड्रेसेस पुरा मैक्सिमम हमर कोड रहछन्ती को एरिया रे विंटर ड्रेसेस बेकाली माने अछन्ती ओडिसा रे कोडी बेसी रहंती बरहमपुर इंडिया रे कोडी बेसी रहंती बॉम्बे रे तेणु सेमानक भितर नेगोशिएशन मध्ये चली छि आमे जो कहउछे जते क्वालिटी सुगर पाउछे बेस्ट दाना सुगर कोउट आसे आमे कहउछे क्यूबा ना पाकिस्तान पाकिस्तान सप्लाई करे सुगर इंडिया को डिपेंडेंसी रे आ इंडिया मध्ये सप्लाई करे कोन बेसिकली जो ओनियंस रहिला जिंजर रहिला हां सेटा भी ट्रेड रिलेशन भीतर आसुची तने हमरे कहबा उद्देश्य होची पिले मन रख जेतेबेले गोटे कंट्री आ गोटे कंट्री से रिलेशन कटुची माने इन द सेंस ट्रेड रिलेशन में बहुत लूजर होउछ हम प्रोडक्ट कि आम देशर लोक नेबे हम प्रोडक्ट कि तम देशर लोक नेबे आमे जेतेबेले कोनोसी गोटे पॉलिटिकल फील्ड रे डिफाइनमेंट करूचे आधरे बेनिफिट पाउची कि चाइना पाकिस्तान रे हाईली चाइना प्रोडक्ट इंडिया रे हाईली चाइना प्रोडक्ट तनु पिले देखा पिले आ कोन देखिबा हमें ए then trade infrastructure the home ministers of India in presence among others the commerce ministers of India and Pakistan and the chief ministers of the states of Punjab of two countries inaugurated integrated check post ICP at Attari on April 13 2012 the Attari CIP represents vastly improved infrastructure to facilitate trade and travel. Spread over 118 acres, it contains a passenger terminal measuring 9,600 square meters, a dedicated cargo terminal measuring 4,700 square meters, and a separate import and export warehouses measuring
10,000 square meters apart from over 50,000 square meters of a parking space for trucks and equally large area for future expansion. In recent months, various segments in Pakistan have spoken in favor of opening more lands trade routes with India, including Munabao, Gorakhpur, Kharkarpur, जोड़ा है Kharkarpur होची पंजाब रा देखा पिले इंडिया रा विशेष करी पंजाब रा बॉर्डर लागी ची राजस्थान रा बॉर्डर लागी ची गुजरात रा बॉर्डर लागी ची का सहित पाकिस्तान से जदि ट्रेड एग्रीमेंट करा जीव मन रख इंडिया सिना साइन करिवो बॉर्डर रे जो चीफ मिनिस्टर रहिले एमओयू रे से माने सैंक्शन करिवे बॉर्डर रे जो चीफ मिनिस्टर रहिले से माने साइन करिवे कारण दीटा कंट्री रो जो नेगोशिएशन रहइबो कोठी ना बॉर्डर रे तेणु परस्पर भितर केमिति आदान प्रदान करा जिबा एवं जो पंजाब सहित पंजाब रो प्रोविंस रे जो रिलेशनशिप रहइबो पंजाब रे जानितो लोक माने प्राय जो माने कॉन्शियस जानितो पंजाबी लोक माने ही ड्राइविंग सिखैछथि अलग लोक माने पंजाब रे मैक्सिमम ट्रक तेणु सेपट ट्रक एपट ट्रक पंजाब लोक मानकर पंजाबी लोक मानको से नेगोशिएशन पई चाहिले ट्रेड बिजनेस को एनहांस करिया पई किंतु पॉलिटिकल फील्ड रे किछि ना किछि रेस्ट्रिक्शन आसिला. So students, other initiatives, industry representatives and officials from two countries. मु पढौची जदि कार पर्सनली रहिला प्रॉब्लम अंडरलाइन करो क्लास सरला परे किबा एक्स्ट्रा आवर रे हम डिस्कशन करी कंप्लीट करिबा कारण एनीवे हमकु चैप्टर कवर करिया पड़िबो. The other initiatives, industry representatives and officials from two countries have held discussions on trade in electricity and also trade in petroleum products and liquefied natural gas. Officials of the central banks of both countries have also met to discuss cooperation in the banking sector inter alia by opening branches of two public sector banks in each other's country. Pakistan welcomed India's recent decision to allow investment from Pakistan. Pakistan has also expressed appreciation for India's support for getting approved the EU trade concession package for Pakistan by General Council of World Trade Organization. देखा पिले both countries मानक भितर नेगोशिएशन चलला तमे जानिथिबो इंडिया जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आनुची कोड आनुची मैक्सिमम ईरान को आनुची सेटा बाईपास रे आछि कोड पाकिस्तान को ता देर पाकिस्तान किछि इंटरफेयर करबेनी kana इंटरनेशनल परमिशन बेसिस रे चली छि इंटरनेशनल गोटे ट्रेड नेगोशिएशन अछि ताको सागर कला परे तम देश देकरी कोनोसी प्रकार बैरियर कोनोसी प्रकार टनल मध्ये पास आउट हेकरी जाई परिबो तेनु आमे पुनी आ गोटे देखिबा पाकिस्तान मध्ये वेलकम करछि इंडिया सहित किछि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जोटा देइ छि एटा होछि 2012-13 मसिया कथा 10-11 वर्ष तळर कथा एटा हे गेलानी तो से रिलेशनशिप ऑलरेडी क्रैकल डाउन ऑलरेडी पेंडिंग हेलानी तेणु आमे जेते बेले कोन करिबा कंक्लूजन एटा को लिखि देला परे परे कंक्लूजन क्वेश्चन रे रिसेंट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर्तमान कोन घटना घटुची ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नरेंद्र मोदी before Pakistan's actually after the annihilation appearance of Musharraf Vajpayee जो मानक सहित इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप अग्रनाइज हेतला एवं वर्तमान केमति सेटा डेमोलिश हेइची केते विलोप घटी सब कोन करबा कंक्लूजन क्वेश्चन रे रखिबा एगुडा खाली सो मोड बुक रे देछि पढिबा कथा भले दिस आर द इवेंट्स ऑफ 2012 2012 मसिया रे इवेंट एगुडा जो हम डिस्कशन करते रिसेंट डेवलपमेंट ऑलरेडी देछि रिसेंट डेवलपमेंट किंतु एगुडा का दे आर ट्रैकिंग डाउन. Indira Gandhi once said that she could visualize a time in the future when India and Pakistan would have normal, even friendly relations, but she did not have the same hope for relations with China because she said it was essential and expensive power. And how do recent events validate her instinct and analysis? Indira Gandhi most foreign field re foreign affairs minister हिसाब रे बापा जेम थिले नंबर 1 foreign minister फाइनेंस के हमरा विशेष करी एक्सटर्नल अफेयर्स रे सेम इंदिरा गांधी कर व्यू थिला इंडिया पाकिस्तान भितर रिलेशनशिप दिने ना दिने नॉर्मल हबो जोटा रही छि बाउंड्री इश्यू पे रही छि किंतु सबबेले से नेगेटिव वे रे दिले का सहित ना चाइना सहित केना चाइना रो सबबेले एक्सपांशनिस्ट माने कोन टेरिटोरियल अग्रेंडाइजमेंट से चाहिबो सबबेले मो टेरिटोरी की केमते बढे बढी चलेबे किंतु पाकिस्तान ना से भली प्रकार इंटेंशन नाही जोटा भी रही छि ऑन द बेसिस ऑफ बॉर्डर प्रॉब्लम. देखो स्टूडेंट्स, as far as Pakistan is concerned, it is universally acknowledged that it is the military establishment which is most opposed to normalizing relations with India. Indeed, it appears to have a vested interest in keeping India and Pakistan relations tense. Friendly relations with India would seriously undermine the region theater for the inflated size of the armed forces. They would lose control over the security policy and over Afghanistan and India policy as well as control over nuclear arsenal. In other words, the military establishment would become an adjust of the civilian government. The military establishment would, thereby losing not only its preeminent position but also its self-cultivated image of being
the only institution that can safeguard and save the people in effect from themselves. It might also lose at least a part of its economic empire. Thus, for the Pakistan military, it makes sense not to normalize relationship with India. जदि हमें कहबा गोटे होची de facto गोटे होची de jure और गोटे होची de facto. De facto means by fact वास्तविक. De jure means temporarily. De jure means borrowed concept. देखा पिले हमर इंडिया पाकिस्तान रो रिलेशनशिप जदि परफेक्ट हे गला वर्ल्ड कम्युनिटी रे बहुत कंट्री लूजर हेबे कारण तमे देखि नियो फर्स्ट लूजर होबे के अमेरिका अमेरिका तार आर्सेनल गुडा सेलिंग करछि काको पाकिस्तान को यदि इंडिया पाकिस्तान भीतर नॉर्मलाइज हो गला रिलेशन अमेरिका हो चाइना हो सोवियत यूनियन हो फ्रांस हो जापान हो से मानकर जो ट्रेड बिजनेस लॉस करबनी के हमपर होबनी के तेनु इंटरनेशनली के चाहूनाती इंडिया चाइना इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप गुड रहू बोले अच्छा consensus of a detent देखा पहले on the other hand getting or going by the election manifesto of a major political parties in Pakistan there seems to be growing consensus among politicians for the detent with India. What is the meaning of a detent? Detent means nuclear ceasefire. परस्पर भीतर डिटेंट रहइबा मु अब न्यूक्लियर वेपन बनेइबिनी कि तुमे न्यूक्लियर वेपन बनेइबनी इंडिया न्यूक्लियर वेपनरी बनेइबनी कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बनेइबनी एक एग्रीमेंट होउची सत कि जो रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग हेइ परुनी जो रिलेशनशिप दैट इज द फेल्योर ऑफ अ डिटेंट एवं डिटेंट मध्ये हेइतिला का भीतर अमेरिका और सोवियत रशिया भीतर देखा detent with India. Their manifestos not only did not contain anti-India rhetoric, they also indicated a willingness to promote peace with India. The party coming Prime Minister Nawaz Sharif even went to the extent declaring that it will open the transit route for trade between India, Afghanistan, and beyond through Pakistan. Since winning the election convincingly, he has reiterated his desire to work for better relations with India, which Prime Minister Manmohan Singh has warmly reciprocated. देखा जेतेबेले नवाज शरीफ पाकिस्तान रे इलेक्शन मैनिफेस्टो रखिले जे जदि मु पावर को आसिली तले इंडिया सहित किछि ना किछि ट्रेड रिलेशनशिप रखिबी क्रिकेट रिलेशनशिप रखिबी किंतु कोनोसी प्रकार सक्सेसफुल हेइ करलानी कारण कोन पिले जदि हमें देखिबा जेतेबेले नवाज शरीफ बेले हमर इंडिया रो प्राइम मिनिस्टर थिले कि मनमोहन सिंह कहले जे प्रकृति रे हमें जो एलओसी कहउते लाइन ऑफ कंट्रोल ताकू कर देबा एलओपी लाइन ऑफ पीस उभय कंट्री कोन करिबा पीसफुल नेगोशिएशन रहिबा देयर बाय हमर कोन करिबा ट्रेड रिलेशनशिप मध्ये इंप्रोवाइज करिबा बट इट वाज नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड Imran Khan's party also spoke of a progressive detent with India. This trend needs to be noted and welcomed in India. It is suggested that a politician mainstream might be ready to stand up to the military in case the latter came in the way of normalizing relations with India. Whether it is able to do so will remain be seen, but at least it has made public its intention to do so. Mr. Sharif has declared that he will be the boss and that civilian supremacy will be asserted. If that happens, the possibility of normalized relations between the two countries can certainly be entertained. Indians have a tendency to launch from euphoria to hostility. In reacting to development neighboring countries, we need to wait and watch. ये रिलेशनशिप भितर गोटे होची यूफोरिया हमर इंडिया रा रिलेशनशिप रहइबो अदर कंट्री सहित यूरोशिया यूरोपियन और एशियन कंट्री मानक भितर रिलेशनशिप रहइबो बहुत गुडे टर्मिनोलॉजी अछि एंड एटा होची वाइटल फॉरेन पॉलिसी हमें आधर लिमिटेड विशेष किछि देइनी जेतेबेला हमें इंसर्जेंट व्यू पढिबा फर्स्ट लेवल जे माने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखिबो इंटरनेशनल लॉ और फॉरेन पॉलिसी गोटे सेपरेट चैप्टर रहिछि जोटा कि अग्रेडाइज वे रे रहिछि एठी मोर कहबा उद्देश्य होची इमरान खान आसिले पावर को जेतले पॉलिटिकल फील्ड रे से आसिले सेतेबेले से मते डिक्लेयर करथिले इंडिया सहित डिटेंट रखिले अर्थात न्यूक्लियर जो एबोलिशन रहिछि किछि एग्रीमेंट को सपोर्ट करिवे आ न्यूक्लियर आर्म्स और आर्मिनेशन दीटा को कंट्री एते प्रोक्योरमेंट करिवेनी किंतु सब गुडा परफेक्ट करिगला कारण कोन पिले मन रख एकमात्र गोटे जिंस होउची क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान रो जदि हमें देखिबा टोटली 8% कवरेज होउची पीओके 8 तो में 7 समथिंग से पीओके एरिया रे प्रकृति रे को माने ही वार करूचंदी काश्मीर रो जो नेग्लिजेंस गोष्ठी से मानक मन रे गोटे स्वप्न रहिची काश्मीर के हम इंडिपेंडेंट करेइबो पाकिस्तान एठी कोन करची जेतेबेला ताको ऑक्युपाई कर रखिची जेते गोटे ट्रेजर आ ताकर जो घाटी गुला सब आर्मर रे करची को पीओके रे
ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲେସନସିପ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପିଓକେ ବାଲା ସହି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରସ ବର୍ଡର ଟେରରିଜିମ ଜାଣିଥିବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବର୍ଡର ପାଖରେ ଯୋଉ ଏରିଆ ରହିଛି इंडिया पाकिस्तान रो बाउंड्री लाइन सेठी पिले घंच जंगल रही एवं जो लाइटर स्किन रही मिनिमम 1 किलोमीटर पर्यंत तुम लाइट पड़ो एते पावरफुल लाइट जोटा कि विशेष करी हमर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यूज कर अरे लाइटर पड़ले जे माने ड्यूटी करछन ट्रेंचर रे घाटी भीतर बसछन से कोठु पाकिस्तान वाला ले कि एपटर इंडियन वाला गला आको मुंडो पर अलरेडी क्या पर रही लाइट से माने जो बॉर्डर रहछन बहुत कष्ट रहछन तेणु पिले मन रख ताको पाकिस्तान पठैलानी आसिले को माने पीओके एवं से पीओके माने स्वतंत्र घाटी करछन सेही माने ही तालिम नै सेठी रहिछन इंडिया किंतु कहूची कोन आको पठै छि केना पाकिस्तान पुनी देखो पिले मैक्सिमम टाइम जम्मू काश्मीर रे जो बम ब्लास्ट करूची पर पाकिस्तान वाला नहीं करूछन ना जो पीओके रो लोक अछन एई मु कहबी तमे वर्तमान क्लासमेट हेकि अछ कोन करूछन से माने किछि भूल करनादी काई करछन भाबी नियो तमे एटी गोटे फैमिली वाला चलुदिलो सेपटर पळै गेले पाकिस्तान को एपटर पळै गेले इंडिया को भाबी नियो इंडिया रहला से काथा पाखरु साडे को पाकिस्तान रहला से एसी मेसिन पाखरु साडे को ये दीटा का सफर रहउ ना दी ताको मन भितर निया जोडछ नै जानी बर्निंग फायर ऑफ वंस दे आर इंडिपेंडेंस सेही दिपई से माने कहउछथि ए बॉर्डर ही लागी कि रहइबो एई बडी एनिहिलेशन चलिबो आ इंडिया ट्रांसपोर्ट जेति करछि पाकिस्तान टेररिज्म सेटा होछि कार लॉस इंडिया जेति के मिलिटरी खर्च करछि सेटा होछि इंडिया रो लॉस एमानक भितर एमिति गोटे रहि जायछि 77 वर्ष में 77 वर्ष होला परे भी एई बडी चलिबो जते यंगर जनरेशन आसिले ये मझिरे जो कंट्रोल रहछि एटा इन्फ्लुएशन से माने केतबेले प्रवेश करि जाउछन एमाने केवल प्रवेश कर जाउछन आ बॉर्डर जे लाइन रहिला से बॉर्डर लाइन रे एपटरू रहछि केते 9 किलोमीटर सेपटरू रहछि नियर अबाउट 12 किलोमीटर सेपटरे 12 किलोमीटर इंडिया 9 किलोमीटर हां जंगल एरिया रही जोटा कि कोन होची ना फायरिंग से माने करछथि आसी पीओके लोकन ऊपर पडुची इंडिया वाला फायरिंग कले सेति पई नरेंद्र मोदी कोन मु सर्जिकल स्ट्राइक कर देली से कोन पाकिस्तान भीतर को जानती सी आइले सीमा पे करू एई दिके गोटा बम पके देई पळै गेली ये जो घाटी किए माइले काश्मीर वाला माइले ताको निज भाई काश्मीर की हमें एटा जो माने एजुकेटेड लोक अछन जे माने जानुछन फॉरेन पॉलिसी पीओके वाला किछि भूल करूनादी आ जम्मू काश्मीर वाला भी किछि भूल करनादी इंडिया भी किछि भूल करूनी पाकिस्तान भी किछि भूल करूनी भूल होती ब्रिटिशर मान से माने जो पार्टीशन कले मु उदाहरण स्वरूप कहबी हम बापांकर तमे तीन पुआ अछ बापांकर तीन जगह रे अछि कोन लैंडेड प्रॉपर्टी जदी कोन हला गोटे लैंडेड प्रॉपर्टी जणे कोन कहला टिके अधिका नेकी होला कि ना बड़ पुओ आउ दी जण के भीतर टिके लिमिटेड रहला ऑटोमेटिक गोटे इश्यू आसीबनी कि फ्यूचर रे दैट हैपेंस टू बी बर्तन सेटा ही घटुची पॉलिटिकल फिगर मानकर बेस मिस्टेक अछि नेहरू पर मध्ये किछि रहिछि मिस्टेक आ सबुठार बड़ मिस्टेक हला इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन होबा एही बडी सिचुएशन आरंभ होइतला हमर कार ना ईस्ट जर्मनी आ वेस्ट जर्मनी समय ईस्ट और वेस्ट जर्मनी लोक माने टैलेंटेड से माने देखले काहे के ईस्ट और वेस्ट भीतर हम काचिर रखिबु से टोटल उड़ी गेले निजुक निज मिसी गेले जो भी गोटे गोटे दिले के सोवियत यूनियन सपोर्ट कर दिला आ गोटे सपोर्ट कर दिला के अमेरिका से माने जर्मनी ऊपर आकर कि जो काटू गलानी आ इंडिया पाकिस्तान तो जानि तो इंटेलिजेंस चालू कोन पर कथा रे माने बाहर कंट्री रो बंधुबास के रहउछ अपन निज देशर भाई कंधरे भाई भाई के मारछ आर्मरी सेलिंग होछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज करूछ अब ले देखो देन स्टूडेंट्स does this mean Pakistanis have finally accepted that India has no evil designs on their country that they have nothing for fear from us opinion polls in Pakistan have suggested that India is not the top of their list of most worrisome subjects. The realization that the country is being torn from within by forces nurtured by their own agencies seems to have turned on them. The business lobbies and Mr. Sharif is a businessman are certainly interested in opening trade investment opportunities on a reciprocal basis. बोले आमे होचे निरीह लोक आमे किछि जानि परुना हमकु समस्त शोषण करूछन ब्रिटिशर माने स्वाधीनता पूर्व शोषण करुथिले स्वाधीनता परे आम देशर नेता माने हमकु शोषण करूछन तमे जेते बेटी बड़ ऊपर लेवल को पळै जिवो तमे जानिबो आमे को जगह रे करप्शन मुक्त नुय आ सबुठर बड़ कथा हला यदि वर्ल्ड रे के गोट थांती से होचे इंडियंस आमे खाली बिलीव करछु डायलॉग रे बट डेस्टिनेशन आमे बिलीव करनु तमे भी भाबी निया पिले सब जगह रे आजि कली कोनोसी ऑफिस की जाओ कोनोसी ऑफिस नै एमिति करप्शन न होउछु बोली पर दिन घटना मु जाइथिल गोटे रजिस्ट्रेशन रे लक्ष लक्ष टका कारबार तो सबुठर बड़ कथा हला
जो माने रहिचंदी लोक माने टॉप लेवल रो पुलिस ऑफिसर आउ दे आर वेरी अटैच्ड टू मी से माने सीक्रेटली कहले आजिकल दुनिया रे गोटे लोक मनीष सबुठ बेसी लोभ करे पैसा को यदि तुम पॉकेट रे प्रतिदिन संध्या बेल को आसिक 50,000 टका पहुंचो तुम कौन दरकार कौन होउची ऑफिसर रहिला ना रहूनी गोटे साधारण लोक को दिया 10 कोटी टका सी बिजनेस कला ऑफिसर माने इंटरेस्ट पाइले कौन नाम ऑफिसर सचोट लोग यही भली चली पिले तुम देखिले आश्चर्य कौन सी जगह इवन एते रिलेशन साइक्री मते भी करप्शन माने मु बदे करप्शन बाबू पछैलेनी कारण मोर काम हासिल करिया दरकार यदि आम एजुकेटेड लोक फ्रेंडशिप सर्कल एते कारबार चलती जो चिन्ह परिचय नथियो परिस्थिति कौन होती देखा पिले by and large most people sorry the realization that the country is being torn from within by forces nurtured by their own agencies and drawn on them the business lobbies and Sharif is a businessman are certainly interested in opening trade and investment opportunities on a reciprocal basis सब बेले मन रख जते बेले फॉरेन पॉलिसी हमें पढुचे फॉरेन पॉलिसी रो मेन ऑब्जेक्ट होउची हमें we would have to donate needle and brought the spur हमें छुंची दबा साबळ आनियो दैट इज मारवाड़ी पॉलिसी हमें कोन करबा इन्वेस्टमेंट करिया पूर्व भाबी नबा मु जदि से देश रे कोन से बिजनेस पटेइली ताले मु रिटर्न कोन करी मो पाकु रिटर्न कोन आसीबो ताकु कंसीडरेशन कला परे हमें जेंकि ट्रेड रिलेशन कोन करबा एस्टैब्लिशमेंट करबा